टैगोर हो, तिलक महाराज हो, कई लोग हैं, वो सब लोग ने एक स्पेस हमको दिया। अपना जो मूवमेंट का स्पेस है उसको सिकोड़ दिया, ब्रिटिश जेल में घुस गए छोटे से कमरे में, लेकिन पूरी प्रजा को बहुत बड़ा स्पेस दे दिया, प्रोवाइडिंग ऑफ स्पेस। इसलिए जब कोई शासक आज का हो या कल का हो या परसों का हो, यानी डे आफ्टर टुमारो, उसके साथ हमारा साहित्य अकादमी का कोई संबंध नहीं। शासक तो आते जाते हैं, तो लेकिन ये काम क्या हमें करना है कि हमें पूरी प्रजा को पुस्तक देना है। उसके लिए द बुक नहीं चाहिए, बुक्स चाहिए। उसका आनंद है कि बुक्स बहुवचन में है, क्योंकि द बुक, इसने तो अत्याचार किया है, बहुत बड़ी बड़ी है वो, लेकिन वो स्वातंत्र के साथ उसका संबंध नहीं है, अनुशासन के साथ संबंध है, संघर्ष के साथ संबंध है, युद्ध के साथ संबंध है। उसमें द बुक चाहिए, रूल बुक। स्वातंत्र के लिए तो बहुवचन में पुस्तकें चाहिए। एक पुस्तक दूसरे पुस्तक को कुछ हटा भी दे, एक पुस्तक दूसरे पुस्तक के साथ जब तक बहस न करे तब तक बुक में से बुक्स नहीं होती है। So this internal dialogue, this internal conversation, intertextuality of the books is something that we'll discuss today. इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, भारत में एक बुक कहते हैं, लेकिन हमारा तो क्या शब्द है, आपको तो मैं क्या कहूँ, उसका ग्रंथ शब्द है हमारा। तो जो बुक होती है उसमें से एक सबसे अच्छी जो बात होती है वो बाइंडिंग होती है, सबसे गलत बात है। बुक पे बहुत सा बाइंडिंग नहीं होना चाहिए, हमारा भी और पन्नों का भी। लेकिन वो बाइंडिंग के लिए एक दूसरा शब्द है, वो मुझे बहुत पसंद है, वो स्पाइन है। स्पाइन, स्पाइन ऑफ द बुक। द बुक शुड प्रोवाइड द रीडर with his or her spine. लेकिन बाइंडिंग नहीं, बाइंडिंग के बिना का स्पाइन कैसे हो सकता है? वो हमारी भारतीय परंपरा में ग्रंथ निर्माण की प्रक्रिया अगर हम देखें तो होता है। जो ग्रंथ है वो उसका अर्थ ही होता है गूंथना, ग्रथन करना। लेकिन हम किस तरह से ग्रथन करते हैं? स्पाइन नहीं लगा, वो बाइंडिंग नहीं करते हैं। वो पत्ते होते हैं, बीच में एक छिद्र होता है, एक छोटी सी एक धागा निकलता है और धागे एक पत्ते लेगा। और क्या होता है भारत में हम उसे रीडर नहीं कहते हैं, हम उसे सहृदय कहते हैं। सहृदय एक हृदय है, उसके साथ दूसरा हृदय है, सहृदय। उसमें भी हृदय की बात है। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ बुद्धि की बात बाजू में रखी है। भारत तो बड़ा प्रज्ञाशील और बड़ा मीमांसा, साहित्य के साथ हमारे शब्द जुड़ा है मीमांसा, काव्य मीमांसा, साहित्य मीमांसा। मीमांसा मीन्स इंटरप्रिटेशन, हर्मेनेटिक्स, तो वो तो है ही, लेकिन तो अक्षर बाड़ा सरल जो नाम निरक्षर कोई। तो हमारा कान फटा बाबा जो है सरलपा नाथ संप्रदाय का, वो कहता है ईस्टर्न इंडिया का है, कुछ 11वीं 9वीं 10वीं ऐसी शताब्दी का है। अक्षर बाड़ा सरल जो, सकल जब अक्षर बड़ा साक्षर हो गया, बहुत सारे इंटरेक्शन हो गया है। नारी निरक्षर कोई, यहाँ कोई निरक्षर है नहीं, पुस्तक की बात है, निरक्षरता की बात है, अलग तरह की निरक्षरता। अक्षर बाड़ा से अलग जो, नारी निरक्षर कोई, ये अपभ्रंश है ये भाषा। तो अलग अक्षर बोल रही है, कहाँ तक अक्षर को बोलो, नारी निरक्षर। तो ये हमारे भारत के बड़े बड़े लेखक यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं। ऐसा कुछ बहुत प्लेटफॉर्म नहीं है, वो
बहुत अच्छा है, इक्वालिटी की भूमिका है। तो ये पुस्तक से, ग्रंथ से निर्ग्रंथ बनने की बात कैसी, ये इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में ही केवल कॉल टू एक्शन नहीं, केवल ओबीडियंट पीपल नहीं, ये मैं 2 बार करना चाहता हूँ। अब ओबीडियंस की बात छोड़ो, अब यहाँ आकर हमको ऐसा मत कहो कि लेखक को ये करना चाहिए, ऐसा कहा गया है, इसलिए भारत का एक लेखक हूँ, छोटा सा, लेकिन मैं कहता हूँ क्योंकि ये बात बड़ी है, अकादमी के लिए एक प्राण तत्व है, हमें कोई कहे नहीं कि क्या करना चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे को कहें, हमारी पुस्तक एक दूसरे को कहें, हम अंदर एक टेंशन पैदा करें और इसमें से जो ग्रंथ है वो विकसित हो, और लेकिन जो स्पाइन है वो स्पाइन हम सबको मिले, ये शुभेच्छा है। यही बात करने के लिए हम आए हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इतने बड़े अलग अलग तरह से सोचने वाले मेरे मित्र हैं। तो मैं बुलाना शुरू करूँ, विजयानंद जी से निवेदन करेंगे, विजयानंद सिंह जी से कि वो पधारें। थोड़ी सी मुश्किल आप लोगों की बैठने में, हमारा मंच थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आप सब विद्वजनों की उपस्थिति से बहुत बड़ा हो गया है। दिल बहुत बड़ा है। Respected chair, eminent writer of the Indian literature, Honorable Sita Suresh Chandra, honorable participants and friends. My topic is the role of books in Indian independence movement in Odisha. The role of books in Odisha in the Indian independence movement is quite remarkable. After British government of Odisha, it resistance, protest and revolt in Odisha. The Odisha are very much self-respecting state. Habitually, they protest against the injustice. In 1804, protests were held in Khurda. Joy Rajguru, a famous patriot, was the guardian of Gajpati Mukundadev, who was the minor at that time. He revealed his heroism by declaring an agitation against British rule. The agitation was the beginning of the different firms and self in different places at different times. Many Odia patriotic fighters have taken part in Indian independence movement. A patriot and an old leader of Indian freedom struggle, Subhash Chandra Bose was born in 1897 at Cuttack district, Cuttack in Odisha. In fact, Subhash Bose was the greatest gift of Odisha to Indian freedom struggle. The Sipahi Movement of 1857 gave a new orientation to Indian independence from British rule, who were dissatisfied with the Britishers. But months before, the protest struggle was organized in Odisha in 1804. In 1887, Bakshi Jagabandhu Vidyadhar Brahmarbhar Rai Mahapatra had assembled to brave tigers at Khurda and waged a struggle against the Britishers. The terrible struggle had made the British rule afraid. The struggle had continued for 10 years. Odisha had played a special role in Indian freedom struggle. People of different classes, different categories, and even the masses of Odisha had joined the freedom struggle. In the mutiny of 1857, the role of Odisha was remarkable. Chaki Kuntia, Surendra Shah, Madhav Singh, Jogu Diwan, and all others eminent personalities had expanded the revolt against the Britishers at different places. From the very beginning, the intelligentsia of Odisha were involved in the revolt against the Britishers. Institutions such as Paraspara Union Sangha Cuttack
and so many organisms are joining the freedom movement. Similarly, many eminent persons such as Perimon Acharya, Utkal Gaurav Madhusudan Das, Gopal Bhagat Das, Gauri Shankar Rai, Govind Rath, Gopabun Das, Nanda Kishore Bala, Vishwanath Das, Shamsundar Rajguru, Fakirmon Senapati, Gangadhar Meher, the eminent writers of Odisha, Radhanath Rai, Kantakavi Lakshminganath Mahapatra, Abhinam Bhanjo, Navin Chandra Solanki, and all other eminent writers had helped in creating national consciousness among the people through their writings and books in the last half of 19th century and first half 20th century. Many writers and different organizations of Odisha undertook different activities to develop national consciousness. The role of book is significant in the freedom struggle of India. In Odisha, especially in the first half 20th century, writers by writing books in Odia were able to create national outing. In 1915, Mohandas Karamchand Gandhi joined Indian independence movement. At that time, Gandhi, who later became Mahatma, was most discussed in India, but he was more discussed in Odisha. Vishwanath Kara, the editor of the Uttara Sahitya, a famous magazine of Odisha, has described Gandhi as Nara Devata, means God in human form, and had written a elaborate essay entitled Purusha Singha Gandhi. Gandhi, the life Purusha. Many books written in India had a lot influence on the people of Kuwait. The Indian freedom struggle, being influenced by such books, they have activated the struggle, realizing the influence of such books. The government had confiscated them and punished the writers after publishing them. Book like Mohan Bansi, The Enchanting Fluid by Jatiya Virokusodas, published in 1921. Kuntula Kumari Sabha, The Ahwan, means the call, published in 1929. Rakta Sika, 1939, written by Sachidananda Rautai and Ananta Patnaik, were both confiscated and forbidden from reading. Similar, the book Bharata Ingrezer Ratri, the English Night in India, written by Guru Chandra Patnaik, had attracted the attention of the British government. This book was confiscated. The Guru Chandra was imprisoned for a period of 1.5 years. The people of Odisha like to read books. Those type of books influenced people of lot during the period of freedom struggle. In this context, Holy Bhagavata of Abhinam Paramahansa is worth considering. Let us have discussion of the only book. Abhinam Paramahansa was basically freedom consciousness. He led an independent life from his childhood days. He was a famous poet. He was a very fortunate and also a great patriot. Although he was leading the life, he was inspired by Gandhi ideas. He was propagating the message of truth and non-violence in villages. He had thousands of followers. People were inspired by his speech and messages that he wrote Holy Bhagavata in order to create public opinion against the British government was known to the Britishers. The sagas and the anarchy not only preach of a religion, they also protest against the injustice, wrongdoing, exploitation, and superstitions. Therefore, he had written Holy Bhagavata under the impact of the time. Holy Bhagavata is a strong protest against the British government. There are messages of liberation and independence. The writing of this book had begun in 1929 and was completed in 1932. It was read every evening before hundreds of people in every village. The poet Abhinam Paramahansa interpreted the line of explain them to the people. During the freedom struggle, he professed the Mahatma Gandhi, the tallest leader of Indian freedom struggle, will determine when the Indians will triumph in the freedom struggle. He wrote, the English translation of this line will be like this. They are interested in truth, that is why they are called Satyagraha. They are really
There is thesis, so they are punished by the antithesis. They are Satyagrahas, praise in Yunus to Narayan to protest them, and the atheists to torture them. When the Kolibagata was preached and spread, people were hired in almost all villages. The books were read and discussed. It was published in book form from Brahmapur of Odisha in 29th December 1933 and thus attracted the attention of the people. The British government was afraid of the popularity of the book Kali Bhagavata. Durgananda, the then sub-inspector of police station Manga in the district of Cuttack, Odisha, sent a confidential report against Kali Bhagavata to government. In accordance with the direction of the government, a case was filed against poet Abhiram Paramahansa on 20th September 1934 on the ground that the book was a satirist. Prior to this, the houses of the books printer Shashi Bhushan Ratta, publisher Samsudar Bantay, along with the premises of Asa Press was thoroughly searched. Abhiram Paramahansa, Ashram Paramana was also searched about the book. The opinion of the government was like this. The said book contains several passages of citizens' matters intended to bring into hatred and contempt to His Majesty, the King, Emperor, and the government established by law in British India. By the order of 437 Public Journal dated 30th April 1934, published as Gazette Notification, Holy Bhagavata, written by Abhiram Paramahansa, was banned and completely conscripted against the British government. And mentioned the act of the accused did cause hatred and contempt towards the sovereign and the government, the law and constitution of the nation, and the cause opposition in enmity to them. Abhinam Paramahansa was tried from 29th September to 13th December 1934, spanning over a period of about 2 months and a half. The judge Dixon declared that Abhinam Paramahansa was guilty of committing an act of treason. For this, he was given a sentence to rigorous imprisonment for 1 year. Advocate Jagannath Das filed an appeal in the higher court in that judgment, but the appeal was rejected. As a result, Abhinam Paramahansa was imprisoned in Rajmandri jail. It was a new chapter in the history of freedom struggle in India. That the state on freedom fighters was imprisoned after the imprisonment of British government completely banned and conscripted Holy Bhagavata. Pandit Gopabandhu Das was a leading fighter of Indian freedom struggle. The Pradesh Congress Committee of Odisha was formed in 1920 under his leadership. He has served the nation throughout his life and give leadership in all fields. The founding of the newspaper, the Samaj, and the establishment of Satyavadi Monovidyalaya and Ideal Academic Institution were testimonial to fact. Many books written in Odia had a great impact on Odisha, and Odisha played a significant role in spreading out of patriotism and Thank you so much, sir, and it's a humble request to kindly take care of the time given. Thank you so much. चंद्रत्रिका जी से अब हम निवेदन करेंगे कि वो अपने संवाद के साथ आए। सर, आप चाहें तो वहां से बैठकर भी बोल सकते हैं। प्लीज कम सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और बहुत प्यारे दोस्तों, मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि यदि किसी अन्य वक्ता ने थोड़ा सा वक्त ज़्यादा भी लिया हो तो आपके कार्यक्रम के संयोजन में कोई भी फर्क ना पड़े। और जहाँ तक इस विषय के शोध पर तथ्यों का सवाल है, रिसर्च ओरिएंटेड बातें हैं, बहुत सारी अच्छे ढंग से कही गई है और निश्चित रूप से बेहतर ढंग से कही गई है।
इसका कुछ पहलू भी है, तो उस पहलू की बात शुरुआत करता हूँ जैनेन्द्र कुमार जी के एक संस्मरण से। हिंदी के प्रख्यात लेखक जैनेन्द्र कुमार ने उनसे एक साक्षात्कार मैंने लिया और साक्षात्कार के मध्य उन्होंने प्रेमचंद से अपने हुए एक साक्षात्कार का जिक्र किया। साक्षात्कार बहुत लंबा है, प्रेमचंद जी के पास कैसे पहुंचे और उसके बाद वहां पर क्या हुआ, ये लंबी दास्तान है। लेकिन संक्षिप्त में एक बात का उल्लेख मैं आज के विषय के संदर्भ में करना चाहता हूँ कि जैनेन्द्र जी कह रहे हैं कि मैं जिस कमरे में प्रेमचंद जी बैठे थे, जहाँ उनसे बातचीत हो रही थी, मेरी नजर एक स्टूल पर पहुंची और उस छोटे से लकड़ी के स्टूल पर कुछ जली हुई पुस्तक के पन्ने पड़े थे। तो मैंने प्रेमचंद जी से पूछा कि ये महाराज जली हुई पुस्तक के पन्ने ये क्या है, ये किस पुस्तक के पन्ने हैं, मैं समझ नहीं पाया। और आपने इतने प्यार से और इतने बड़े स्नेह के साथ रखे हुए हैं, उसको सजा के रखा है जैसे एक मेमेंटो रखा जाता है, तो इसके पीछे कोई कहानी या कोई खास बात। तो उस वक्त मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया कि ये आज के विषय से का संबंध है घटना का, कि ये पन्ने मेरी उस पुस्तक है जिसकी सारी प्रतियां ब्रिटिश हुकूमत ने चौक में आकर जला दी गई थी, और ये पुस्तक की सोजे पर थी। और उस जलती हुई पुस्तकों के ढेर में से, कहते मेरा एक प्रिय पाठक कोई बड़े प्रेम से कुछ पन्ने उठा के जले हुए ले आया। मैंने उन पन्नों को एक प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में, एक मोमेंटो के रूप में रख दिया। ये पुस्तक उन दिनों में स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में इसका महत्व क्या था, ये इस बात का उल्लेख करती है। बाकी आपने बहुत सी बातें, उड़िया साहित्य की बात हुई, तमिल साहित्य की बात हुई और तेलुगु साहित्य, इन तीनों में बहुत कुछ हुआ। सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि बांग्ला साहित्य में और भी ज्यादा। लेकिन साथ साथ एक विषय उपेक्षित रहा है, वो पंजाबी साहित्य का, उर्दू साहित्य का। मैं समझता हूँ कि पंजाबी में भी उन दिनों में बहुत सारा साहित्य आया, लेकिन उसकी उपेक्षा एक ये कारण भी था कि उन दिनों पंजाबी की जो पुस्तकों की भाषा थी, वो भी जो लिपि थी, वो उर्दू आप इसे पर्शियन भी कह सकते हैं, वो लिपि का अंतर होने से, लेकिन भाषा का मूल स्वरूप पंजाबी था। और उस वक्त ये गदरी बाबे हमारे पंजाब के संदर्भ में बहुत एक महत्वपूर्ण अध्याय है। कभी मौका मिले तो देखिएगा, आपको नेट पे भी सामग्री मिल जाएगी, मैं यहाँ उसका उल्लेख करूंगा तो समय बहुत खर्च हो जाएगा। तो गदरी बाबों के बारे में जो तथ्य हैं, वो मानवीय संवेदना से भी जुड़े हुए हैं, वो वतन की खुशबू से भी जुड़े हुए हैं, और उसमें एक ललक जो है स्वाधीनता प्राप्ति की, वो उस बात से जुड़े हुए हैं। और वो संस्मरण अंदर तक आदमी को मानसिक रूप से भी उद्वेलित करते हैं और हृदय की संवेदनाओं को भी जगाते हैं कि दूसरा गुजरना है, कुछ और करना चाहिए। और इसी प्रकार से वो सारे के सारे संस्मरण स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भी कुछ एक सीमित प्रतियों के रूप में प्रकाशित हुए। फिर उस पर वही प्रतिबंध वाली कहानी, पाबंदियां, वही जलाने वाली दास्तानें, और वही जहाँ जहाँ जिस प्रेस में वो छपे उस प्रेस को सील कर देने की जो कथाएं हैं, ये बहुत लंबी दास्तान है, जितना भी आप पूरे देंगे वो खत्म नहीं होगी। इस विषय में एक और घटना का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। वो उल्लेख मेरा मकसद उसी विशेष चिंतन धारा की ओर नहीं आपका ध्यान खींचना चाहता, लेकिन घटना, क्योंकि हम स्वाधीनता आंदोलन में पुस्तकों की भूमिका या उनके महत्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो घटना कहीं विस्मृत ना हो जाए, हाशिए पे न सरक जाए। मैं समझता हूँ इन दिनों के पुस्तक उद्योग तो नहीं था उन दिनों में, लेकिन पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में अगर पहली हत्या किसी प्रकाशक की हुई थी, एक पुस्तक के प्रकाशन के बारे में लेकर, तो ये लाहौर में सबसे पहले एक प्रकाशक की हत्या हुई और एक किताब को लेकर। अब ये बात है कि हम लोग कई बार कुछ विषयों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमत होने के बाद उसकी परिणति जब किसी की हत्या में होती है, तो इसका मतलब यह है कि किताब का या प्रकाशन उद्योग का उस वक्त भी एक जोखिम जो था वो लोगों को दिखाई देता था, और तत्कालीन शासन के लिए, तत्कालीन शासक वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, उतना ही बड़ा खतरा जितना कि अखबार थे, उतना ही बड़ा खतरा जितने की क्रांतिकारी थे, उतना ही बड़ा खतरा किताबें भी थी। और इस बात का उल्लेख हमें स्वीकार करना चाहिए कि महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि ये किताबें अक्सर
बातें के बारे में बड़ी प्रसिद्ध होती थी कि ये या तो छुपकर पढ़ी जाती हैं, छुपकर ही छापी जाती थी उन दिनों में, और पढ़ने वाले भी छुपकर पढ़ते थे, और बेचने वाले भी कुछ किताबों, कुछ संवेदनशील किताबों को छिपकर ही बेचते थे। एक तारीख मैं आपको थोड़ा सा मिसाल देना चाहूँगा। लाहौर में एक प्रकाशक ने मंटो की एक जो पत्र है, अंकल सैम के नाम, अगर आपको याद हो तो अंकल सैम के नाम खत, वो एक लंबे खत हैं, और नॉट ओनली वन लेकिन बहुत सारे संख्या में खत थे उसके बहुत सारे। उन खतों को वहाँ के एक प्रकाशक ने अपनी एक किताब का हिस्सा बनाया, और हुआ भाई कि वो किताब जो कि मंटो की किताब थी वो तो बिकनी ही थी, और वो हाथों हाथ बिकी। लेकिन जल्दी ही बात खुल गई कि अंकल सैम के नाम खतों की पुस्तक मंटो की आई है। उसका खतरा करते हुए ब्रिटिश शासन के लोगों ने किताब पर ना कोई पाबंदी लगाई, बल्कि वही किया जो वहाँ के लाहौर बुक शॉप वहाँ पर होती थी, तो उसकी सारी किताबें जब्त कर ली गई और उसको भी जला दिया गया। और मंटो उस वक्त शुक्र मनाते थे इस बात का कि इसके अक्सर प्रकाशक कुछ पल्ले नहीं डालता, लेकिन कुछ लेखक से दिनों में ले लेता था, तो कहते शुक्र है कि मेरा इसमें कोई पूंजी मेरे पास थी भी नहीं देने में, तो मैं देता भी क्या। लेकिन मेरी कोई पूंजी खर्च नहीं हुई, और ओरिजिनल जो पत्र थे जो मैंने लिखे थे उसकी एक पांडुलिपि मेरे पास सुरक्षित रह गई, और उसके जो जितने भी अंश हैं वो अब भी जिन जिन पुस्तकों में छपे हैं वो पुस्तकें आज भी धड़ल्ले से बिकती हैं, और इसलिए कि स्वाधीनता आंदोलन में ऐसी सामग्री का जो महत्व है वो इन किताबों के जरिए उजागर हुआ था। अब बंगाल के साहित्य की बात होती है, उसमें मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा, या उड़िया साहित्य की बात या तेलुगु साहित्य की बात, डॉक्टर गोपी से कई बार इस बारे में विचार विमर्श भी करते रहते हैं। इन सारी बातों से एक तथ्य सिद्ध होता है कि किताबों के बारे में, स्वाधीनता आंदोलन में किताबों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जो काम क्षेत्रीय भाषाओं में हुआ वो राष्ट्रीय भाषाओं में उतना ज्यादा नहीं हुआ, और क्षेत्रीय भाषाओं में जो काम है वो प्रभावोत्पादक भी रहा, उसका असर भी, और वो एक बहुत खूबसूरत मोड़ था कि इस देश में लोगों ने अपने जहन को सदा तरोताजा रखने के लिए उन किताबों का सहारा लिया, और वो किताबें प्रतिबंध के ऊपर खूब लगे। तो उस वक्त किताबों के बारे में जब भी हम बात करेंगे हम उसको मीडिया से काट कर नहीं रख सकते, और उन दिनों मीडिया भी इतना सशक्त था कि अक्सर होता था कि हर सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद आपको एक प्रिंटिंग प्रेस पे लॉग लगे दिखाई देते थे। आरोप यही होता था कि इस पे फलां किताब जो है वो आपत्तिजनक छपी है, या दूसरा आरोप ये होता था कि फलां जो अखबार है जो आपत्तिजनक सामग्री छापता है वो इस प्रेस में छपा है। तो ऐसी घटनाओं की भरमार है। जितना विषय की गहराई में जाएंगे आपको तथ्यों की इतनी भरमार आपके खलबली मचाएगी कि आपको लगता है बड़ा देश केवल ये नहीं है कि एक आंदोलन से प्रेरित होकर आज़ादी की लड़ाई के मामले में जूझ पड़ा, बल्कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे तत्कालीन मीडिया की और तत्कालीन पुस्तक जगत की, पुस्तक प्रकाशनों की भरपूर भूमिका थी, और उनमें भी सबसे ज्यादा भूमिका रीजनल भाषाओं की, क्षेत्रीय भाषाओं की थी। धन्यवाद। इस समय के वातावरण में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इसी के साथ हम डीएम बोले जी से हम निवेदन करेंगे कि वो अपने संवादों के साथ यहाँ पर आए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय और मेरे साथी पैनलिस्ट और भाई और बहनों और मेरी पत्नी, हम सब आज दोनों श्रेणी में नहीं आती, बहन और भाइयों रिश्ते नाते जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में सब उलझ गए हैं, तो इसके बारे में मैं कभी और बात करूंगा।
लेकिन मुझे बहुत संतोष है इस बात का कि एक बहुत अच्छे विषय पर इस बहाने चर्चा हो रही है, जो कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव भी हम मनाते हैं। मैं शुरू करूंगा एक कोट से, जो कि भगत सिंह का कोट है। भगत सिंह 24वें साल में, अपनी उम्र के 24वें साल में उनको फांसी दी गई। वो प्रोक्लेम्ड एथेइस्ट थे और धर्म और भगवान के बारे में उनके बहुत ही रेडिकल विचार थे। तो वो कहते हैं, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव ऑफ गेटिंग एनी रिवॉर्ड हियर और इन हियर आफ्टर, quite disinterestedly have I devoted my life to the cause of freedom. I could not act otherwise. The day shall usher in a new era of liberty, when a large number of men and women, taking courage from the idea of serving humanity and liberating them from sufferings and distress, decide that there is no alternative before them except devoting their lives for this cause. Unquote. बहुत कम लिखा है भगत सिंह ने, लेकिन बहुत जबरदस्त लिखा है। लेकिन उनके बारे में कहा जा सकता है कि वो एक तरह से सोशलिस्ट थे और कम्युनिज्म की तरफ झुकने वाले। ये बड़ी सुंदर बात है कि हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में जो किताबें लिखी गई वो पूरा स्पेक्ट्रम कवर करती है, और ये एक तरफ हिंदुस्तान की जो विविधता में एकता है उसको भी दर्शाती है, और दूसरी तरफ ये भी दर्शाती है कि उस समय क्या क्या प्रवाह थे, जिसमें से कुछ बाहर से आया था और कुछ इस मिट्टी से उगा था। तो जब वो फांसी पे चढ़ने लगे तो उनको पूछा गया कि अब तो आप चेंज करो अपना मत, तो उन्होंने उसको भी मना किया और ये कहा, जब उनको पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा, मैं लेनिन के जीवन के बारे में पढ़ रहा हूँ, लेकिन कंप्लीट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम इस विषय पे चर्चा करते हैं तो इसके 4-5 पहलू है जिसके बारे में सोचना पड़ेगा। पहला पहलू है कि ये जो जिन्होंने किताबें लिखी, चाहे वो तिलक हो, लाला लाजपत राय हो, बंकिम चंद्र हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सावरकर हो, अगरकर हो, गोखले हो, इनकी इंस्पिरेशंस क्या थी? इंस्पिरेशन ऑफ द इंस्पायरर्स मैं कहता हूँ। जैसे तिलक थे, वो बहुत रूटेड थे, उन्होंने वेदों का अभ्यास किया था, उन्होंने भगवत गीता का अभ्यास किया। आप अगर देखेंगे पूरा जो आपका गीता रहस्य है, गीता रहस्य में उन्होंने क्या किया, उसमें से एक ऐसी बात ले ली और उसको एक अधिष्ठान दिया, कर्म योग को भक्ति योग और ज्ञान योग के ऊपर। क्यों किया उन्होंने ऐसे? उसके पीछे बहुत बड़ी सोच थी कि उनको इस समाज को हिलाना था, कार्य प्रबंध करना था। क्यों हिलाना था? क्योंकि ये समाज जो है उस परिस्थिति में था जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते। पहली तो बहुत जबरदस्त गरीबी थी इस देश में, लोग निरक्षर थे। तीसरी बात यह है कि दूर दराज के प्रदेशों में फैले हुए थे। उस समय प्रिंसली स्टेट्स और नॉन प्रिंसली स्टेट्स का एक दरार था आपस में, और ऐसे माहौल में 1857 के जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं, सावरकर ने संज्ञा दे दी उसको। उन्होंने पहली बार कहा कि ये रिबेलियन नहीं है, दिस इज अ फ्रीडम फाइट फॉर फ्रीडम, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वहां से प्रेरणा लेने के बाद थोड़ा सा हमारा समाज दबाव हुआ। इसको एक, जिसको हम कहते हैं रिनेसांस की आवश्यकता है, और रिनेसांस के लिए आवश्यक पूरे मुद्दे जो है इस समाज में उपस्थित थे। कुछ लोग पश्चिमी देशों से पढ़ के आए थे। जब तिलक के बारे में सोचते हैं, वो खुद लॉयर थे, बैरिस्टर थे, गणिती थे और वैज्ञानिक भी थे। तो उन्होंने जैसे वेद का जो है कार्यकाल को सोचने के बारे में बहुत साइंटिफिक तरीके से सोचने की कोशिश, आर्यों के उगम के बारे में उन्होंने अपना लिखा। तो एक तरह से, और उसके बाद जो उनकी, इन लोगों की जो जीवनी थे, लाइफ सेल्फ, जब तिलक न्यायालय में खड़े होकर कहते हैं कि इस न्यायालय ने मुझे गुनहगार बताया, लेकिन वो एक ऊपर न्यायालय है जिसमें मैं दोषी साबित नहीं होगा, मैं निर्दोष साबित होगा। ये अपने आप में किताब की
पंक्ति है, इससे कई सारी किताबें बाद में उपजी। उसी समय हम देखते हैं कि तीन चार जो प्रवाह थे, एक तो स्टालिन, लेनिन, मुसोलिनी, हिटलर, इनसे प्रभावित एक वर्ग था। दूसरा जो था वो था सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इसके ट्रेंड से प्रभावित था। जब हम देखते हैं कि हमने भगत सिंह का जिक्र किया, अगर हम जिक्र करते हैं सावरकर, सावरकर के बारे में अलग अलग लोगों के विचार है। मैं जब स्कूल में पढ़ा हूँ, सावरकर को एक कवि के रूप में हमने देखा, और उनकी कविता जो ऐसी है, रोमांच खड़ी करती है। वो जब कहते हैं ने मजसी ने परत मातृभूमिला सागरा प्राण करना, ये समुंदर मेरा जो मेरी जो प्राण है, आत्मा है, वो तड़प रही है मातृभूमि को मुझे ले जाओ। एक ऐसी व्यक्ति जिसको 2 लाइटर मिल गए अपने काम के, और वो कारागृह में कई साल रहे। तो उनकी कविताएं जो है वो पढ़ते पढ़ते हम बड़े हो गए। जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे, इस तरह से वो वर्णन करते हैं इस मातृभूमि का, जो बिल्कुल वंदे मातरम से उसको कंपेयर किया जा सकता है। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि अम्बेडकर एक अलग व्यक्तित्व था, जो इस मिट्टी में भी पूरी तरह से लगा हुआ था। पूरी जीवनी उसकी यहीं से बनी थी। यहाँ का अन्याय, अत्याचार, विषमता उन्होंने देखी थी, और इसके बावजूद उस समय के दुनिया के एक सबसे बड़े ज्ञानी और विद्वान थे, और उन्होंने जो लिखा है उतना शायद किसी और ने लिखा नहीं है, और उसका जितना प्रभाव रहा सामाजिक, सांस्कृतिक और वित्तीय आर्थिक बदलाव में, उतना शायद ही किसी और का नहीं। तो प्रवाह थे, एक राजनीतिक प्रवाह, पॉलिटिकल स्ट्रीम, दूसरा सोशल चेंजेस। अम्बेडकर की जो जीवनी के इंस्पायरिंग लोग हैं, उसमें 4 महत्वपूर्ण लोग हैं। अब देखने लायक है कि क्या डाइवर्सिटी थी उनके इंस्पायरर्स में। एक तो थे जॉन डेवी, जो प्रोफेसर थे अमेरिका में, वो फिलोसफी के प्रोफेसर थे और सोशल रिफॉर्म। गैब्रियल टार्ट, जो कि फ्रेंच थे और वो भी फिलोसोफर थे, और वो सोचते थे कि इमिटेशन एंड इनोवेशन कैन ब्रिंग न्यू चेंजेस। और उनके लोकनाथ करके एक इटालियन बुद्धिस्ट मंक थे, वो भी उनके गुरु थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ इट इज नॉट कि सडनली लोग उठ गए और उन्होंने किताबें लिखनी शुरू की। बहुत सारी प्रेरणाएं जो है इकट्ठी काम कर रही थी, जिसके उधर से ये हमारी और नतीजा हो गया कि ये इतना डिस्पैरेट देश, जो विविध भाषाओं में, जातियों में, धर्मों में, समूहों में और वनवासी टोलियों में बटा था, एक तरह से उसको इकट्ठा बन गया और एक राष्ट्रीय प्रवाह पहली बार बन गया हमारे। और मैं समझता हूँ कि इन किताबों की सबसे बड़ी देन जो अगर कोई है, तो हम सब लोग पहली बार भारतीयता की तरफ बढ़े। और एक आयाम और है जिसके बारे में बात करके अपना वचन समाप्त करूंगा, वो ये है कि स्वतंत्रता का एक फॉर्मल रूप होता है, औपचारिक, जो 1947 में हो गया, हम लोग स्वतंत्र हो गए। लेकिन स्वतंत्रता के आयाम बहुत है, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, शैक्षिक स्वतंत्रता, वैज्ञानिक स्वतंत्रता, जिसको मिलिट्री स्ट्रेटेजिक फ्रीडम बोलते हैं, वो भी ये हमारे देश में अभी पूरी तरह से आया नहीं है। और जो परिणति as a result of all that happened earlier, we have a beautiful constitution that came out of the independence movement, and I think that is the biggest gift that has been given to us by the freedom movement itself. So now the agenda carries on. We have to work on those principles that actually were enshrined in the freedom movement but need to be completed in terms of social, economic and political justice. Thank you very much. Thank you so much sir for your wonderful words। और इसके साथ ही हम शेराज सिंह बेचैन जी से निवेदन करेंगे कि वो यहाँ पर पधारें।
सम्मानीय अध्यक्ष जी, प्रतिभागी साथियों, सभागार में उपस्थित प्रतिभागी साहित्यकार लेखक मित्रों, लगभग 5:30 हो रहे हैं और शायद 6 बजे तक हमारे पास समय है और 3 शायद वक्ता है, तो समय अगर बांटा जाए तो 10 मिनट। मैंने जब ये विषय लिया और जब साहित्य अकादमी का पत्र आया तो कुछ किताबें फिर से देखी। इसमें गांधी जी का हिंद स्वराज, आनंद मठ को मैंने पढ़ा और टैगोर की गोरा को भी मैंने देखा। प्रेमचंद के सोजे वतन की कहानी को फिर से पढ़ा और उन सब पर लिखा भी। भगत सिंह के कुछ पत्र मैंने पढ़े। अब ये पर्चा अगर मैं पढ़ूं तो 1 घंटा इसमें लगेगा। मैंने कोशिश किया कि इसमें काट छांट करके मैं समय के अनुसार कुछ बातें मैं आपके साथ कहूं। बात हो रही थी अम्बेडकर की, गांधी की और प्रेमचंद की भी हुई, भगत सिंह की भी हुई। मैं ये सोच रहा था कि पुस्तक का संबंध किससे होता है, किसको संबोधित होती है और कौन संबोधित करता है। पहली शर्त तो यह है कि पुस्तक वही पढ़ सकता है जो पढ़ा लिखा हो। तो जिस वक्त भारत का आंदोलन चल रहा था, हमारे देश की कितनी जनता शिक्षित थी और उस शिक्षा दर क्या थी और उसका स्तर क्या था, और जो शिक्षित नहीं थे वो किस वर्ग से आते थे और क्या स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई नेतृत्व करने की स्थिति में थे। हाँ, उनके बीच से आने वाले नेता थे जो नेतृत्व कर रहे थे, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो किताबें लिख रहे थे, अम्बेडकर भी बराबर किताबें लिख रहे थे और भगत सिंह के बारे में भी कहा गया कि उन्होंने बहुत कम लिखा, लेकिन जितनी कम उम्र में उन्होंने लिखा उतना कम और क्वालिटी राइटिंग और गहरी बात, सार्थक बात बहुत ज्यादा लिखा होने का भी कभी अर्थ नहीं रहता है। वो देश और समाज के उपयोग की चीज। मैं कुछ हिस्सा पढ़ देता हूँ और जल्दी छोड़ दूंगा। भारतीय स्वतंत्रता, हाँ एक बात मुझे, जब अम्बेडकर की बात कर रहे थे कि कितना अंतर विरोध था हमारे देश में। गांधी जी अस्पृश्यता निवारण का मूवमेंट लेके आए। हालांकि वो तब लाए जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी अम्बेडकर के साथ उनकी लंबी बहसें हुई। उससे पहले उनका ध्यान इस तरफ नहीं था। और फिर उस प्रभाव में लेखक भी आए, जैसे आप मुल्कराज आनंद का छूट देख सकते हैं उपन्यास। भूमिका में लिखते हैं कि गांधी जी के उखा से मैं प्रभावित हुआ, जो एक अस्पृश्य बच्चा था और घर में काम करता था। और ये सवाल डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी से पूछा कि मुझे ये बताइए कि 40 साल तक आप उखा को कैसे भूल गए। मैं तो नहीं भूला, क्योंकि आप देखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन से पहली वाली जो राइटिंग है गांधी जी की, चाहे इंडिया की हो या दूसरी हो, उसमें अनटचेबिलिटी का प्रश्न नहीं है। उसमें कोई भारत की आजादी की बात तो वो हिंद स्वराज में 1909 से ही कर रहे हैं, लेकिन ये आजादी किन लोगों को दी जाएगी और क्या सिर्फ राजनीतिक आजादी कोई आजादी हम कहेंगे? क्योंकि ये सवाल डॉक्टर के जहन में था कि हमारा मुल्क ब्रिटिश रूल से आजाद हो जाएगा, लेकिन क्या जो हमारे देश में
रास्ते पर निकलने पर बंदिश है, पानी पीने पर बंदिश है, पूजा स्थल में प्रवेश करने पर बंदिश है, स्कूल में जाने पर बंदिश है। क्या ये गुलामी नहीं है? और क्या ये इसके लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है? और क्या ये हमें ऐसे ही मिल जाएगी? तो जो आंतरिक आजादी की बात थी, जो आज तक लड़ाई हमारे देश में चल रही है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि उस लड़ाई को केवल कमजोर वर्ग या जिनकी जरूरत है वही लड़ रहे हैं। ये देश से प्रेम करने वाले और समाज का विकास करने वाले किसी भी जाति वर्ग के लोग इसमें काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। लेकिन समस्या हमारे देश में बरकरार है। मैं एक घटना आपको बताऊं, अभी मीडिया की बात हो रही थी कि सारे अखबार गांधी की बात कह रहे थे, नेहरू की बात कह रहे थे, उन्हीं के अखबार निकल रहे थे, और अम्बेडकर का कोई जो विचार है, और अगर वो अखबार की बात नहीं सोचते तो शायद उनका विचार समाप्त हो जाता। और जब उन्होंने 1919 में मूकनायक निकालने की योजना बनाई तो उन्होंने विज्ञापन के लिए तिलक के केसरी में विज्ञापन दिया। और उनसे निवेदन किया 3 पैसा है, वो 3 पैसा विज्ञापन का बनता था, उसके साथ उन्होंने विज्ञापन भेजा। उसके बाद भी वो विज्ञापन नहीं, और विज्ञापन तो और सामाजिक समता भाईचारा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। तो ये जो हमारे नेताओं का अंतर्विरोध है उसको भी हमें समझना होगा, और किताबें इसको हमें समझाती है। भगत सिंह की बात हो रही थी और भगत सिंह का एक संदर्भ भी आपने दिया। मुझे मैंने कीर्ति में भगत सिंह का एक पत्र छपा था, उसका छोटा अंश मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने इसमें मेयो की किताब का जिक्र किया, मेयो इंडिया की लेखिका थी, और 1925 में जब किताब आई तो काफी विरोध भी हुआ। गांधी जी ने तो कहा कि ये गटर के इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है, किताब नहीं है, गटर के इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है। अम्बेडकर और भगत सिंह 2 लोग थे जिन्होंने उस पुस्तक का समर्थन किया, और उन्होंने ये कहा कि ये किताब समाज का यथार्थ दिखाती है, और यथार्थ वो कि हमारे देश में 12 साल की लड़की की शादी हो रही है 50 साल की लड़की से, जो पहले से ही 5वीं में आ रहा है, और वो बीमार हो रही है। और इस तरह से जो उन्होंने बाल विवाह का, विधवा विवाह के विरोध का जो निश्चय करके दस्तावेज तैयार किया, उसका समर्थन हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने नहीं किया, सिवाय भगत सिंह। हो सकता है किसी एक और क्या हो, मेरी खोज यहीं तक है, तो मैं ये भी दावा नहीं करूंगा कि कोई किसी और ने नहीं किया होगा। भगत सिंह लिखते हैं, यह काम उतने समय तक नहीं हो सकता जितने समय तक अछूत को में, ये काम मतलब असली आजादी, समाज के साथ आजादी, अछूत को में अपने आप को संरक्षित न कर रहे। हम तो समझते हैं कि उनको स्वयं को अधिकारों की मांग करना बहुत आशाजनक संकेत है। अधिकारों की मांग उठने लगी थी, गोलमेज सम्मेलन हो गया भारत के अंदर ही अम्बेडकर के नेतृत्व में, तो भगत सिंह कह रहे हैं कि ये अच्छे संकेत हैं कि वो अपनी भी आजादी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अम्बेडकर ने मूकनायक संपादकी में लिखा था कि स्वराज हो तो ऐसा हो हमारा भी राज। तो उन्होंने ये कहा कि स्वराज में हम जिनकी बात बर्दाश्त नहीं करते, स्वराज मिलने के बाद हमें उनकी लात बर्दाश्त करना, ये बात आज उनके साथ। तो भगत सिंह लिखते हैं, अधिकारों की मांग करना बहुत आशाजनक संकेत है, या तो सांप्रदायिक भेदभाव का झंझट खत्म करो, नहीं तो उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। इसलिए हम मानते हैं कि उनके जनप्रतिनिधि हैं, वे अपने लिए अधिकार मांगे। उठो अछूतो कहलाने वाले असली जनसेवकों, उठो
अपना इतिहास देखो, गुरु गोविंद की फौज की असली शक्ति तुम्ही थी। शिवाजी तुम्हारे भरोसे ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्ण स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। तुम जो नित्य प्रति सेवा करके जनता के सुखों में बढ़ोतरी करके जिंदगी संभव बनाकर ये बड़ा भारी एहसान इस देश पर करते हो, उसे हम लोग समझते हैं, हम नहीं समझते हैं। तुम पर इतना जुर्म हो रहा है कि मिस मेयो मनुष्यों से भी कहती है कि उठो, अपनी शक्ति पहचानो, संगठित हो जाओ। असल में स्वयं कोशिश किए बिना कुछ भी न मिल सकेगा। स्वाधीनता चाहने वालों को यत्न करना चाहिए। इंसान की ऐसी आदतें हो गई हैं कि अपने लिए तो अधिक से अधिक चाहता है, उनके माथ और अपने माथत है, उन्हें वह अपनी जूती के नीचे दबाए रखना चाहता है। तो दूसरों की बात मत करो, दूसरों के मुंह की ओर न ताको, तुम असली सरदार हो। संगठन बंद हो जाओ, तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होगी, बस गुलामी की जंजीरें कट जाएंगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ न बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए सिरों उठो और बगावत खड़ी कर दो। ये भगत सिंह का पत्र प्रकाशित हुआ कीर्ति। तो एक पक्ष ये था। दूसरी में अगर 5 मिनट और मुझे मिले तो मैं कहूँ, नहीं कहूँ? 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट में 3 बातें कह देता हूं। और एक बात तो ये है भारत भारती के बारे में। भारत भारती किताब पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा, ये मेरे जहन में और बहुत सारे लोगों के जहन में बात होगी, क्योंकि भारत भारती को की कविताओं को कहते हैं कि वही बहुत ही स्वतंत्रता के आंदोलन में उत्तेजना देने वाली थी। मैंने कहीं पढ़ा कि क्योंकि इसका अनुवाद करके ब्रिटिश शासकों को कहा गया कि भारत भारती का मतलब है जनाना भारत, और अंग्रेजों ने यह माना कि जनाना भारत का मतलब है कि जो भारत की जनानियां घर में गुफ्तगू करती हैं वो बातचीत इसमें है और कुछ नहीं है, क्योंकि कविताओं के भाव को भी समझाने वाला चाहिए। फिर भी मैं ये बात देखता हूं कि काफी जगह उन्होंने ब्रिटिश सरकार की प्रशंसा भी की है। एक जगह वो लिखते हैं, बिकते गुलाम न थे यहाँ, हमें न ऐसी रीत थी, सेवक जनों पर भी हमारी नित्य रहती प्रीत थी। नीचे गिरों को ऊंचा चढ़ाते थे हमी, पीछे रहे को घूमकर आगे बढ़ाते थे हमी। तो ये जो हमारे भारतीय उच्च वर्णों का सबक था कि वो ये मानकर चलते थे कि उन्होंने नीचे गिरों को उठाया है। हालांकि ये जो ये अस्पृश्य जातियों का संदर्भ आता है तो वहां ये उठाना कहीं दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी ये कहते हैं। और जहां तक गुलामों की बात है, अगर अंबेडकर का अछूता अनटचेबल जो 1948 में प्रकाशित हुआ, और जिस समय भारत को स्वतंत्र हो रहा था उस समय ये लिखी जा रही थी किताब, 1947 में 48 में ये आ गई थी। उसमें वो कहते हैं कि गुलाम जो था अफ्रीका का, अमेरिका का गुलाम खरीदा जाता था और बेचा जाता था, खरीद फरोख्त होती थी, आप सब लोग जानते हैं। अंबेडकर का कहना यह है कि उस खरीद फरोख्त में चूंकि हमने कोई चीज खरीदी है तो वो बीमार न हो जाए, वो मर न जाए, इसका ख्याल रखना पड़ता है मालिक को। क्योंकि अगर वो गुलाम मर जाएगा तो जो उसने पैसा दिया है वो पैसा मर जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ अछूत के लिए तो ये वर्ण धर्म में व्यवस्था कर दी गई कि वो सेवा करेगा और सेवा के बदले कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। तो फिर एक मरे या 1000 मरे, बीमार रहे या कुछ भी रहे, किसी को कुछ लेना देना नहीं। तो ये उन्होंने अंतर स्पष्ट किया कि अस्पृश्यता जो है वो गुलामी से भी भयंकर अमानवीय है। और उन्होंने यहां तक भी कहा कि मैं, तिलक कहते हैं
कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं बंद कर देता हूं, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ये कहता हूं कि अस्पृश्यता निवारण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी अस्पृश्यता गुलामी के बराबर मान के वो चल रहे थे। तो खैर बहुत सारी बातें हैं, बच्चा मैं साहित्य अकादमी को के हवाले कर दूंगा, अब यहाँ तो पूरा पढ़ा नहीं जा सकता, और लिखने की बात है तो लिखी गए, कहीं और लिखेंगे। आपने मुझे समय दिया, साहित्य अकादमी ने आमंत्रित किया, और आपने मेरी असुविधाजनक बातों को बर्दाश्त किया, मैं इन सब के लिए आपका जी, मैं भी बिल्कुल यही कहने वाली थी, असुविधाजनक कुछ भी नहीं था। और सर आपने जितना भी हमें बताया बहुत प्रेरक था, बहुत ज्ञानवर्धक था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप नाराज तो नहीं सर? इसी के साथ हम तमिल जी पांडे मैम हमारे बीच में है, हम उनसे निवेदन करते हैं कि ऊपर आए। Respected chair, respected co-hosts, dignitaries of the dais and friends of the dais, a very good evening. It is a break from the monotony. I was just waiting for my chance. There's a saying in Tamil, பத்து மனிதர்களுடைய கண்களை விட ஒரு பெண்ணின் இதயம் அதிகம் பார்க்கின்றது. That is, a woman's heart has a far more insight than the eyes of 10 men. So probably, I'm rather happy to share the stage here along with my counterparts. And at the outset, I'd like to just make a note about books, because that was a beautiful, wonderful introduction given by our chair, especially the pun which he had coined with the word spine and the binding. Usually he called the spine of the bound as spine only, and he is beautifully punned it. And I remember one notable writer who had actually asked, how would you rate a book? Is that the actual price for any book you're paying? All that you're paying is just the price of the paper and the price of the printing. Nobody can actually pay a book its actual price, because it's much more than that. That's how all these books, especially books which have flipped and given a rise to the emotions and passion of our people, to kindle the patriotism and to set the sun in an empire which would boast that sun will never set in our empire. Famous writer Chinua Achebe once said, if an Englishman comes and boasts before you that sun never sets in England, as a proud native person, you have to give a very befitting repartee to him, saying that yes, sun will never set in England because God will never trust an Englishman in darkness. So, opposing an empire which boasts of a sun never sets, we are here to just discuss the role of books and books that are priceless. And the same Chinua Achebe, the Nigerian novelist, again highlighted an important point when coming to recording history. He says, until the lines have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter. So the role of the books are very, very important, because those were the documents and those were the records to the generation handed over to the generation next, which speak volumes about the sweat, the battle, the pain, the sacrifices made by the commoners as well as the freedom fighters. So this quote reminds us of the need to write our own histories. True accounts of our independence movement would have been impossible if our people did not write about it. Literature hence became the critical avenue for truth and resistance during the freedom movement. And I would like to start with the fact that tracing more about the part played by Tamil patriots and Tamil writers, especially Tamil commoners also, in kindling the spirit, and the few number of books which were notable books which were written and which were able to
keep the fire of the independence just in the heart of the people throughout flaring it. So during the early years of the colonial era, when the printing press arrived in India, writer historian Graham Shaw records that of 1,671 books printed in South Asia, including 427 in Sri Lanka between 1556 and 1800, 266 were in Tamil. Tamil also constituted almost 40% of the 672 books printed in the Oriental languages during that period. It was followed by Sinhalese, Persian, Bengali, Armenian, Hindustani, and Konkani. Such was the pioneering publishing works of Tamil scholars. These were either missionary or Tamil-sided scholarly publications. But only 250 years later, after the Tamil first saw print, non-missionaries and natives had begun engaging in the printing technology. It is the local magazines I would just like to share that content in the form of pamphlets and orations. They were the actual tools. Because books, there is a tendency to neglect a little bit about pamphlets, the chapbooks, the oral literature, the folklore traditions. Because Tamil Nadu has a rich history of the freedom fighters much before the actual War of Independence starts. To name a few, I would like to say that, see, we have Puliteva, who was a rebellion king against the British in 1757 to 58. I want you to just make a note of these years. At Nelkettum Sevel, a South Indian village, saying that he would not pay taxes. Subsequently, the village was changed to Nel Kattada Sevel. The next rebellion was that of the Kattaboman and others during 1797, 1801. And we have this great Queen Velunachia. And she was the first Indian queen to wage war with the East India Company, 1780 to circa 1790 in India. She is known by the Tamils as Veeramangai Velinachia. So you must be familiar with Queen Elizabeth's famous speech in, I think, Tilbury, when England won a war in the Battle of Tilbury. Queen Elizabeth gave a commemorative speech appreciating the soldiers in the Parliament, and her speech was much appreciated. In the speech, she opened up her speech with like this, the opening quotes: "Though I have the weak body of a woman," imagine the Queen of England speaking like this, "though I have the weak body of the woman, I'm proud to say here that I stand before you as a woman who has the strong heart and stomach of the King of England." It was well appreciated. But Velinachia, with all her mastery in war weaponry, silambatam, in horse riding, she was proficient in 3 languages in those days: Urdu, French, and English. And her story has been passed as oral tradition, folklore songs, which kindled the sense of patriotism all among the South Indian commoners. But she had the guts to proclaim that, why should I have the heart and stomach of a man? As a woman myself, as an Indian queen, she carried her baby at the back and went to the battlefield. Such was the history of the freedom fighters, which were recorded in pamphlets, folklores. And just to commemorate the historical contribution of the Tamil people, our Chief Minister recently, Mr. M.K. Stalin, announced in 2021 that the Tamil Nadu government will compile and publish a document detailing the contribution made by the Tamil Nadu to the Indian freedom struggle. For wider dissemination and while respecting the role of the federal values, the document will be published in Tamil as well as in English. In his speech, he has made a wonderful observation. He has rightly said that while it was already 75 years since India won independence, the fight for freedom had begun 150 years before, and the land of Tamils played a major part in it. And coming back again to the publication of books, I just mentioned about the local magazines, and the books written during this period have helped in the world and further generations to understand the Indian freedom struggle, much available in a lesser paisa.
See, books were sold in Tamil Nadu, 1 anna book, Arayana book, 9 paisa book, 6 paisa book, among others, so that the common people, working people can get lay their hands upon it and get to know what's happening. For example, Nagai Swaminathan is an illiterate. He studied only third class and picked up art from a co-worker in the railway workshop. He later joined the Communist Party. He would later come up with a Tamil version of the French poet Eugene Poitier's Internationally, the famous anthem of the socialist movement. There was a saying in Tamil, Pichekka Bhaskaradas, Perumaikka Shankaradas, Pichekka Muthusami. These were the writers in Tamil who had actually kindled the spirit of patriotism. And much has been mentioned about our indomitable spirits, the great Bhagat Singh, Dr. Ambedkar. Ambedkar's Mukh the role played by Mook Naik. I wanted to point out a certain incident when Mook Naik was given for advertisement with a paid prize in Kesari, which was run by our famous veteran freedom fighter Tilak. The magazine refused to carry an advertisement. Even the price for advertisement was being paid for that. Such was the resistance faced by Dr. Ambedkar. And mention about Bhagat Singh had also been made here by one of my co-panelists. And I do have, so when it comes to the self-respect movement, Suyamaryadai Sangeeta Ratnam was banned on the grounds that it contained outrageous attacks on Brahmins. Another notable event was the proscription of Bhagat Singh's Na Natigan. Why am I an atheist? It is translated by P. Jivanandam, a Tamil communist veteran leader who would later become the most prominent communist leaders of the Tamil Nadu. It was published by Pagutarivu Noorpadipu Kadagam, an organ of Periyar's self-respect movement. And again, no words can describe the works of our great renowned Bharatiya, who drew heavily on those people, popular verse forms to express himself. He wrote in the commonest language. There is a saying that Shakespeare wrote in common people's language. Addison wrote in the language of poets. So he was easily forgotten. Shakespeare has actually written in the language of the commoners, and he is considered as a perennial poet. Like that, Bharatiya expressed himself in people's language. He consciously used the popular forms to rally the subaltern classes for the nationalist projects. And he was not alone. We have Bharati Dasan, who told in his line, who modeled himself on Bharati. He wrote on the similar lines, and early works are best described as chapbooks. Bharati's Panjali Sabadam would be a perfect example, which he wrote in exile from Puducherry. And it was because of such nationalist elements in the chapbooks, the colonial government involved police and surveillance and control of publications. That's the word which he had punned up with booked and book. So there are many instances when such books were banned from circulation. In 1907, the chapbook Swadesha Chindu was published, which did not come to the notice of the government until the customs officer at Dhanushkodi confiscated a copy of the book from a passenger from Jaffna. In the aftermath of the Swadeshi movement, the Indian Press Act 1910 came into forces to check the growth of the nationalist literature. It is said that the Madras Provincial Cooperative Union Library was raided and all the books on Russia were seized. Works actually Arabinda Ghosh, Charithram and V.S. Iyengar's biography of Garibaldi were banned under this act. After the assassination of British collector Tinnavelli Rao at Ash in 1911, there was a panic in the government, and works such as Kanavu and Anil were banned at that time. And I'm coming to the concluding part of it. So, what I hence deeply feel here is we should have a twin approach. On one hand, we need to look at literature and how it helped for our freedom movement. And on the other hand, we need to put conscious efforts in writing the unheard, unspoken, and unremembered histories. And we need to document the unsung heroes. And one mention about Gandhi, one specific book
about which had actually influenced him and which is the greatest inspiration to us. Before I conclude, is that Hindu Swaraj, written in 1909 when Gandhi was returning from London on a ship, is that important book to be noted down here. Originally written in Gujarati and he himself translated it. According to the historian Professor Mukherjee R, if Gandhi's life ever had a central text, it is this Hindu Swaraj. It is in this book he talked about four things: Daridra, a simple life; Abhaya, fearlessness; Ahimsa, non-violence; Satya, truth, which became the four pillars of Gandhi's sustenance. So it is our duty, that's what I mentioned about the twin approach, to record all these movements either in, both in print media as well as in the form of pamphlets, chapbooks, as well as which have been handed over to us generations together through oral traditions, folklore, and document it and let the generation be proud of being Indians and what a heavy price we have paid for getting our independence, so that let us just live our life each day remembering the sweat and blood which had actually acquired independence to us. Thank you. Thank you very much for a paper without which this discussion would have not been complete. Because the role of women, the body of women in this freedom struggle, had you not said this, we would have all been lacking. Well, thank you so much, ma'am. For to accommodate our speaker as much as we have accommodated all, or at least minimum. Once again, thank you so much, ma'am, and you look exactly like your speech, fearless, beautiful, and most impressive. Thank you so much. और अब हम वासीदी जी नवीन जी से निवेदन करेंगे कि वो कृपया करके यहाँ आए. in which I see say sustainability and fellow colleagues and friends. It's a different issue. Is it, for me, is a very big question. Rather perplexing to think about the role of books and literature in influencing the change in course of society, the building of various movements. When the literacy was only 5 to 10% in the country. Really, was it possible? Did the books really help to inspire the people's movement to take up the battles against the British? To look into this aspect, we have to delve deep into the role played by the books, along with the national leaders like Tilak, Gokhale, Gandhi, who was spearheading the national freedom movement. I don't think that so far this issue was studied comprehensively. Though the impact of the freedom movement on books or literature was given an extensive thought, but not the impact of the books on Indian independent movement. So the Sahitya Academy needs to be congratulated, since it has taken up this issue not only here. The last year, when last time in January, when Festival of Letters was happened, the same was the topic there. So, in my opinion, the role of the books in molding the national freedom movement can be looked into analyzing the issue in three ways. One is the influence of books on the leaders of the freedom movement. Though it is 5 to 10%, as I said, but the leaders of these books were influencing the leaders spearheading the movement. Especially if you think about it, by 1912, Mahatma Gandhi never thought that he is going to lead the freedom movement when he was in South Africa. But he was indulging
in different struggles there in South Africa for Indian freedom movement. And in those days only, he read a book, Unto the Last, as everybody knows it, Unto the Last, written by John Ruskin. Really, that book changed the whole philosophy of the Gandhiji. And that book, because of that book only, he evolved the theory of Sarvodaya as well as the Gram Swaraj. Both the theories evolved through that book only, influenced by that particular book only. After coming to India, he wrote several articles and books basing on that. And he led the Indian independent movement basing on that. That was the great influence on Gandhiji. And one more book is there that influenced Gandhiji to lead the Indian independent movement is The Kingdom of God The Kingdom of God is Within You by Tolstoy, Russian writer Tolstoy. It influenced him, and it influenced in the way he adopted the non-violence movement. That book influenced to create the non-violence movement. So this way, some of the books influenced Gandhiji. Besides Tilak's writing, Gokhale writings, and Lala Lajpat Rai's writings, and all those things. The very fact at the same time is Nehru's autobiography is also played an important role. When, though as I said, 5 to 10% literacy rate was there, but in the first year itself, the biography of the Nehru's autobiography was reprinted 9 times within 1 year. 9 times within 1 year. So that was the influence on the other leaders and the people also. The prominent Telugu author, and now I come to my land, Telugu land, as my colleague talked about the Tamil land. The prominent Telugu author, Unnava Lakshmi Narayana, who wrote Malapalli, a novel. Malapalli means a Dalit Hamlet. A Malapalli novel. It influenced. No, because he wrote that novel. Before that, he translated Bipin Chandra's writings into Telugu. With the influence of those writings, when he was in jail, he wrote that novel Malapalli. That was the influence of Bipin Chandra Pal's writings on Unnava, Lakshmi Narayana. So that book was banned later, immediately when it comes out in 1923, it was all banned also. The same way he was influenced by his earlier Renaissance leader, Kandupuri Vidyasaringam. He was influenced. The same way he was Bharatiya's close, though they never met, he was a very close associate of Bharatiya. And one more thing which influenced the latest of the book in those days in Telugu land was, nobody believes it, it is Maxim Gorky's mother. Maxim Gorky's mother, Professor Lingarazu, who translated that book in jail. And then that was influenced a lot of leaders in those days. And one such leader was Darsi Chansaya, who led the Weather movement in those days. That book influenced the Darsi Chansaya. So this way, stalwarts in national movements, like there are other national movements in Telugu land, Konda Venkatapaya, Tangudu Prakasham Pantulu, Pattavi Sitaramaya, lasting imprint of they are all influenced by Gandhiji book. My experiments with autobiography. They are all with particular that influence. They actually participated in the national independence movement. Similarly, many books that were published in regional languages also, they were translated into Telugu, and those books were influencing the next generation leaders. So the second point is direct impact of the books on the movement. The direct impact, while the ideological and political literature influenced the leaders of the movement,
The common people were eager to know about the creative writings about the movement. Stories like literary forms like short stories, novels, lyrics, art forms, especially the art forms like drama and harikathas, etc. So they were influenced. You know, everybody. National uh, movement means Vande Mataram. Without it's almost synonymous to our the national national movement. Freedom. Without Vande Mataram, we cannot think about. So Vande Mataram, though it was written in Bengali by Indian novel Anandamath, it translated into every language of India. It translated, particularly the poem Vande Mataram was translated and reverberated throughout India in those days. There was no village without Vande Mataram song, without Vande Mataram movement. Because of that particular song, the whole the Indian independent movement was took a different turn. That was the influence of that particular song. The same way in Telugu land, there is another song. It is called Makoddi Taladartanam. We don't want this white rule. Makoddi Taladartanam. That it's a tremendous influence on the common people, especially the rural people. So it has a lot of influence. And again, that was written by Verimalla Satyanarayana. He wrote some other poems also. And like that, the songs like Sare Jahan Secha, the songs by Ram, Ram Kumar Bismil, Urdu Ghazal, and so many things. And also Jhanna Unchera Hai Hamara. These are all songs influencing the people directly, not to the leaders. The books himself were the leaders in those days. On the other side, there are certain books. Say, Veer Savarkar's Hindutva. Veer Savarkar, another book, Indian War of Independence. They also played an important role. Not only that, the life stories of Prithviraj, the life stories of Shivaji, they are all influencing our people directly. Another 3 minutes, sir. And as I said, Gorky's mother, all these books were banned. All these books were banned in those days. The translation, not only that, to unify the country, to say that we are one, the nation is one, to propagate this idea, the translations played an important role in those days. Most of the Bengali books are translated into Telugu. Most of the Bengali books are translated into Telugu. The Russian literature was translated into Telugu to inspire the Telugu. Yes, Tamil also. And Obaya, a novel written by Veluru Sivarama Sastri Malapalli, as I said just now. And there is another interesting thing is Damaraj Kundari Kakshudu. He used to write very small skits, 40-page books, 20-page books. He used to publish them. I'll tell you in another 2 minutes afterwards about the books. This is the second part. The third part is there is another method to gauge this role of books on freedom movement is to look at it into the British angle. Why British has banned all these books? Was it really necessary for them? Because they played a very important role, that's why they banned it. Otherwise, they would not have. Maybe some social issues, books related to the social issues and moral issues, they have banned some few books. But political books, they have banned just because they are influencing the people. They have, because of the influence the movement. One particular, there are more than 100 books. There are more than 100 books that were banned in Telugu land itself, and at least a dozen of the writers were put in jail and they under the sedition case. And once is Verimalla Satyanarayana, Malapalli, Unnava Lakshminarayana, so many people, and 15 writers were put into jail. So this is one way to gauge the, yes, another 1 minute. This is one way to gauge it. And at the same time, somebody said, the books banned in Telugu land is so many. So this is the impact of the books. These are the 3 ways which show, which had the impact on the Indian freedom movement.
Now I would like to say that I would conclude my session with saying one word that, as I said in the beginning, does really books have an impact? Yes, they had a lot of importance. They had a lot of influence on individuals as on creating the movement itself. So that was the importance of books. But unfortunately, in some of the governments, I don't know, all the states I cannot say, in some of the governments, book publication or translations are being neglected like anything. So in future, we don't know what type of books we are going to read and what type of books influence us. Thank you. Thank you, sir. I will only say one thing. The phrase, unto the last, with your presentation, sir, brings new meaning. Our last speaker has really added one dimension unto the last. And he brought in the perspective of the British, which none of us thought. And we thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। और इस परिचर्चा के बाद एक बात तो समझ में आती है हम सबको, जो आप जैसे इतने ज़हीन नहीं है, इतने समझा नहीं है और इतना नहीं पढ़ा है हमने, बात ये समझ में आती है कि अगर उस समय इतने ऊर्जावान और इतनी जागरूक लेखनी लिखने वाले नहीं होते तो शायद हमारा स्वतंत्रता आंदोलन बहुत धीमा हो चुका होता या धीमा हो ही गया होता। और आप सब साहित्यकार उन सब बातों को दोबारा से लिखकर किताबों के माध्यम से हम तक नहीं पहुंचाते तो हम शायद इस ज्ञान से, इन बातों से अछूते रह जाते। तो सभी का धन्यवाद करते हैं। इतिहास के भवसागर से इतने चमकदार मोती निकाल के आपने हम सबको प्रदान करे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साहित्य अकादमी की तरफ से आपको एक हम प्रदान करना चाहेंगे। Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for this session. This was a wonderful session. और आप सबकी प्रतिभागिता के लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सब भी साहित्यकार हैं, अपनी लेखनी के लिए, अपने ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। आप सब यहाँ आए, आप सब ने इसमें अपनी प्रतिभागिता दी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस सत्र से हम विराम लेते हैं, साथ ही आज के दिवस की सभी परिचर्चाओं से, सभी सत्रों से हम विराम लेते हैं। लेकिन कल इस उत्सव का आखिरी दिवस है, आप सब जानते हैं, आप सब यहाँ हमारे साथ रहेंगे। सभी का धन्यवाद करते हैं और सभी को कल के लिए हम आमंत्रित करते हैं। हमारे 5 वेन्यूज हैं और एक छठा वेन्यू हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का है, जिसमें शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। आप सब उसमें भी जरूर पधारें। सभी का धन्यवाद। नमस्कार।